What Noor wanted was freedom. And the one thing Noor never got was freedom. अम्मा वो लम्स के एडमिशन्स खुले, मैं सोची थी कि मैं भी कर दूँ अप्लाई। इतना पढ़ने का शौक है ना, जरा घर के काम भी कर लिया करो। पकड़ो और डस्टिंग करो। चलो। अम्मा नहीं है मुझे शौक यार घर के काम करने का, मुझे पढ़ना है। Noor often wondered if her mom wanted the same thing and never got it. She swore anyway to never be like her. की कंजर खाना मचाया है घर च उसकी मचाई हुई है ए किथे ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं ਉਹ ਬੈੱਡ ਦਾ ਪਾਇਆ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਲਮਕਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਪਈ ਹੈ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ जी तेरी क्यों हमारी उंगलियां हैं? हैं? तेरे? नहीं अम्मी ये आयरा का ये मेरा नहीं है। तेरे प्यो ने तेरे बेड के थल्ले कढ़िया है। ये वो आयरा आई थी ना पिछली बार तो वो छोड़ के गई थी, इधर ये मेरा नहीं है वो। हाँ आयरा इन्हें सारी चीजें तेरी भूलनी है। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਪਿਓ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਮਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੂਥੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ Noor, तुम्हें याद है when we discovered this spot for the first time? You were so scared, but then you weren't scared at all. I don't understand तुमने मुझे इधर क्यों बुलाया आती है? You know I have a lot going on. You always have a lot going on. Please यार अलती, I'm not in the mood to fight. मैं तुमसे यहाँ लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। फिर क्या चाहती हो? Why are you pushing me away like this, Noor? अलती, not everything is about you, okay? Then what is it about? You say you love me and then you don't talk to me when shit's going down. Like, I don't know how this makes sense, Noor. यार अलती, ever since Dayan got called out for what happened, things haven't been the same and you know that, ठीक है? लिटरली मुझे अपनी टाइम की सेंस ही नहीं समझ आ रही। लाइक आई डोंट इवन नो कि 10 मिनट हुए हैं, 10 घंटे हुए हैं, 10 साल हुए हैं। नथिंग इज मेकिंग सेंस टू मी। ही वॉज आवर फ्रेंड। आई एम लिटरली सो बैफल्ड बाय दिस सिचुएशन अलती। आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू। ही वॉज आवर फ्रेंड एंड ही हर्ट पीपल। So Noor, what does that have to do with me? With us? Your silence, Alti, that's what it has to do with you. I don't understand कि तुम उसकी शक्ल भी कैसे देख लेते हो। How are you completely normal with him? Do you have any idea what he did to Zarlina? तुम्हें पता है उसने उस बाकी लड़कियों के साथ क्या-क्या किया हुआ है? तुम कैसे उसके साथ ठीक रह सकते हो? That is my problem. How do you not understand that? और ऊपर से he's your so-called best friend. तुम्हें कभी कोई आइडिया नहीं हुआ कि उसने ऐसा कुछ किया है? तुम्हें लगता है कि वो completely innocent है? Do you really believe that? Noor, अगर तुम मेरे ऊपर एक enabler होने का इंजाम लगा रही हो ना, then we have a whole other problem. अलती, हम सब enablers हैं in our own ways. Literally सालों से दयान अपनी हर एक्स के बारे में
ऐसी ऐसी घटिया बकवास करता है, दुनिया जहान की बकवास करता है. Any girl who doesn't like Dayan is crazy. Any girl who doesn't want to be with Dayan is crazy. Any girl who leaves Dayan is crazy. Anyone who calls him out is crazy. अब तो मैं भी crazy हो गई हूँ. I'm also crazy because I don't want to talk to Dayan. Isn't that right? तुम कैसी बातें कर रही हो नूर? आहिस्ता बोलो, कोई आ सकता है. You're making no sense right now. दयान और उसकी एक्सेस का सबसे क्या रेलेवेंस है? I miss everything, Alti. You know, आज अम्मा अब्बा पागल हो गए थे. We had a really bad fight at home और मैं बार बार यही सोची थी कि if I just got into a car right now and I came to CBT to see you guys, कि तुम लोग उधर ही बैठे होगे हमारे वाले टेबल पे drinking the same thing and I could just come sit with you guys and pretend like nothing ever happened and everything would be okay. I miss you, Noor. I really do, and I can't do this without you. I can't live without you. Please मेरे साथ इस तरह मत करो. अल्ती, मेरा ये ख्याल है कि we shouldn't be together. I think कि तुम्हें अपनी choices खुद से बनानी चाहिए. And I think that not being together will help you understand कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो. What are you talking about, Noor? अगर तुम्हें ध्यान से मसला है, तुमने तो अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी. It's not about that, Alti. हम दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हैं, Alti. We're both very different people. I know कि इस वक्त हम एक शहर में एक जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन inevitably हम बहुत डिफरेंट जिंदगियां गुजारेंगे. Noor, you need to trust me. मसला ये है कि you can't trust me. And you know, you can be so difficult sometimes that I can't. I'm difficult, Alti. I'm the difficult one. तुम मेरी best friend को lead on कर रहे हो for a couple of gigs. You're not dissociating with your harasser best friend, and I'm the difficult one. I've not even complained to you once about any of this, Alti. You haven't complained? Noor, all you do is complain about shit I don't have choices in. You know कि मुझे आयरा की जरूरत है. ना मैं एक well connected family से हूँ, ना मेरे पास इतना पैसा है. तुम हमेशा मेरी मजबूरियाँ मेरे मुंह पे मारती हो, Noor. Every time. Alti, ये choices जो तुमने लगाया हुआ है ना, ये सब बकवास है. Do you understand that? Choices कुछ भी नहीं होती. ये जो तुमने अपना ब्लॉगर लाइफस्टाइल वाली चॉइस बनाई हुई है ना लाइफ की, that is a choice. और फिर उसके बाद तुम जो मजबूर होने की एक्टिंग करते हो, that is also a choice. और नूर, तुम अपने आप को एक सेंट समझती हो, as if you're not fucking pretending, because it works for you ना, चलता है तुम्हारे लिए. Because you live in a world where people fucking pity women, नूर. अगर तुम्हारी जैसी लड़की अगर लम्स चली जाए, that is considered as fucking celebrated success story. कभी मेरे बारे में सोचा तुमने, नूर? A child with fucking failing grades, a neglected child, उसका क्या? वो चूतिया है ना, नूर? The truth is our choices boil down to the same thing, नूर. You want respect and I want respect, जो हमें कभी नहीं मिली. बस फर्क इतना है, तुम में सेल्फ राइचियसनेस कूट के भरी हुई है, नूर, and you can't understand it. I knew you had a lot to say about how my words were laced in unchecked misogyny, how I was misconstructing her, how I was using all of her insecurities against her because I felt threatened. But I couldn't just let her go like that. This was me fighting. क्या फायदा दो लोगों का साथ होने का जब वो एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते? And I understand that we loved each other, but love is not enough. आपको उससे ज़्यादा चाहिए होता है एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, और वो सब हमारे बीच में नहीं है. So it's just better that we're not together. Go away, Noor. Run away when shit gets tough. Bye, Alti. I hope you find someone who's just as superficial as me. Yeah, I guess so. Hey, Dayan. Hello. Oof, yaar, I am so tired today. I can't even tell you. अभी कमेटी से वापस आई हूँ. Literally the whole day was just working on the resolution.
And अभी वो part खत्म किया है about CEDAW not ratifying the US not ratifying the CEDAW clause. God, I hate social committees. What my school did to me is a hate crime. Don't use that word so lightly. Sorry, China. Since when did you care so deeply about social justice oriented moral considerations? Since when did you become like this thesaurus reading nerd? Hey, you guys. Hi. Are you working on the resolution? Yeah, actually we're almost just done with it. I'm just waiting for the delegate of Russia to wind up the final few clauses of us. मेरे दोस्त बता रहे थे you're killing it in the UNSC. Yeah, that's kind of what I'm known for. Achha, let's just not nerd out on this resolution, Abhi. Let's just grab some food because I'm really hungry. Nah, I gotta go. I'm busy. Best of luck, Noor. If you need help with anything, let me know. Okay, thank you. Bye. Bye. See you. That's really hot. Hello, Assalamu alaikum. Hi. You must be Noor. Hi. Yes, nice to meet you. I'm Zen, the director of FEMSOC. Oh, it's so nice to meet you. Actually, how are you? I'm good. I saw your application, and unfortunately, the only reason we didn't accept your application is because you still follow Dhyan Akhtar Kareem. Okay. Actually, you know what? What really surprises me is the fact कि आप लोग कहते हो कि आप FEMSOC के हो और उसके बावजूद you looked at my application and you just went for the optics of it. You didn't even look beyond it, like beyond the surface level of my application. You didn't even think कि है कौन, who is she, what does she want, why does she want to be a part of FEMSOC? Like, But we're not going to accept your application. okay, thanks for letting me know. Bye. Hello, क्या चाहिए तुम्हें दयान? Noor, I'm sorry. तुम इससे बात कर सकती हो. You haven't even heard my side of the story. We've been friends for years, damn it. There's nothing to listen to, दयान. मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती हूँ. तुम झूठ बोल रहे हो. You're doing this because you pretend to be woke. You know I'm innocent. Innocent? My fucking ass, you're innocent. A breakup is a surprise gift box. You never really know what's inside. Sometimes you know a gift is coming, but other times you have no fucking clue what it'll do to you. You can try to prepare yourself for what's inside, but you can't. That's life. Unfucking predictable. Stalking me? याद है when we all used to share our locations. तुमने मुझे कब तक इग्नोर करना था, नूर? हमेशा के लिए दयान. नूर, एक मिनट मेरी बात तो सुनो. Do you actually believe I harassed Alina? I can't do this right now, okay? Dayan? Noor? What is going on here? I was just leaving. मैं तुमसे आराम से पूछ रहा हूँ, नूर. Don't push me to my limits. मैं कोई बेचारा victim नहीं हूँ जिसका जो दिल चाहेगा वो मेरे पे इल्जाम लगा देगा, भाई. I'm gonna come for that bitch. This shit's not gonna stay like this. And you know she's not gonna back down without a fight either. Noor, you're still taking her side? She hasn't even told people what actually happened. I can't believe you. He raped her! What the fuck? Okay? He fucking raped her! Is that what she's telling you? What this fucking bitch? Yes, that's what she's telling me because that's exactly what happened, Dayan. The night of the party. Pucho Dayan se. When the three of us left, where the fuck was he? She's lying, Noor. Where the fuck were you ध्यान जब पार्टी के बाद निकले थे? तुम कहाँ थे तब? Dayan, you told me. बस कर दो आयरा. तुम्हें समझ नहीं आ रही कि जो भी मेरे सब कुछ किए सिर्फ तुम्हारी टेंशन लेने के लिए किया है, जेलस करने के लिए किया है. तुम्हारा ध्यान अलती से हटे तो तुम मुझे थोड़ा अटेंशन दो ना. I just dropped to Rome and that's it. I would never. That's Oh fucking fuck you, Noor. Fucking touch me. Rip his fucking cunt.